This Hi, lady Ali. over here, Hello. yes. Can we have the mic over here, please? Excuse me, hi. Do you have the mic? Yeah, hi. I have the mic. Yes, please. Ali, to your right, I have a question for you. Hi. Yeah. This is Kunal from India Forums. Thank you. The trailer looks really good, bloody good, as we say. So my question is very simple. Shahid has, now become like a more so like a genre-breaking actor. He's doing stuff, he's now probably exploring more than ever. So my question to you is that, apart from the fact that you all go, beyond, like way back with each other, have a history, wanted to work with each other, what was it about Bloody Daddy and the script you felt that this is it for him? Because it's a first for him, as we've constantly mentioned, it's his first actioner. So what was this script that you felt that ye iske liye hi bana hai? See, सबसे ज़रूरी चीज़ है that even when I made action film with Mr. Salman Khan, I always want to do the character first and then bring the actor in. So, and that is why, when I work with him, a lot of people say that it's a very good marriage of an actor and a director. With Shahid, when I came to him, I made a call. It was COVID. I was in Dehradun. He was in Bombay. We were jamming after Kabir Singh. He called me and he said, Ali, kuch karte hain saath mein. We were talking about a sports film together. Then when I got Bloody Daddy actually is an adaptation of a French film, okay, which is called Sleepless Night. I saw the film. Sunir actually, Khetrapal, who I think right now is in Cannes because he's more glamorous than us, called me and said, yaar, ek mere paas picture hai, tu please banayega. So I saw the film. And I really liked the film, and why I liked the film is because it was like a trip, an action film which is relentless, moving really fast. But when you do a remake, what is very important is that you need to find a zameen for that film. You need to find a land. And I was very clear कि अगर मैं इस फिल्म को दिल्ली गुड़गांव में सेट करूंगा ना तो मुझे एक जमीन बहुत अच्छी मिलेगी. And the film is set in the time of COVID. So the COVID line in the film is not a joke. It is set in the time of second wave. And when I was happy with the adaptation, I could only see one actor in that role because the original actor in the film is a brilliant actor and he has a lot of intensity in his eyes. So I said, there is no other actor who can justify this role apart from Shahid because I just feel he is an actor star, which is a great combination. Whether you see Heather, whether you see Jab We Met, whether you see even Kabir Singh, his characters penetrate more than his stardom, which is a very good thing. So I said, मुझे एक actor चाहिए जो ये 2 घंटे की film को एक रात की कहानी को hold कर पाए. And then everything in the film is designed to him. Whether it's an action, whether it's the writing of the film, whether it's the intensity of the film, everything is, it's a headline film. It's like Bloody Daddy, Shahid Kapoor, So सब कुछ उस किरदार से निकल के आया. And that is why I think when people are finding it new age and लोगों को लग रहा है and they're drawing comparison, it's new because a new star is doing an action in a new way. Which is believable, which is raw, which is rustic. मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलेन पिटता है, यहाँ हीरो भी पिटता है और हीरो को चोट भी लगती है और दर्द भी होता है, which is more the reality of the situation. Hi, Shahid and theatrically. What I wanted to know is also when a film has this kind of dark content and there's a lot of extreme violence in it, there is blood, there is gore, there is drugs as a central theme. Automatically, does the choice become easier that this needs to come on OTT because theatrical is become more of a family viewing medium now? यार मैंने तो कबीर सिंह की मेरे लाइफ की सबसे बड़ी हिट है, वो अडल्ट फिल्म थी. ये सब ज्ञान जो अभी आप बोल रहे हो, these words that this dark and this and that, सब बोला था लोगों ने कि बहुत लिमिटेड होगा, but it turned out to be the biggest success of my life. So I think we should think fresh. है ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स ऑल टेल आवरसेल्व्स हमें कुछ नहीं पता है, जो हमें पता है वो पहले के लिए रेलेवेंट था, अब नई चीज़ें हो रही हैं, ऑडियंस क्या देखना चाहती है ये उनसे पूछते हैं ना, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, वो सही नहीं है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये फिल्म तो इधर ही आएगी, वो फिल्म तो लेट्स रीलर्न, लेट्स बिकम स्टूडेंट्स अगेन,
let's be open to the fact that we don't know everything, and the things that we grew up kind of thinking can change, which is what Ali started by saying, that cinema is growing, and post COVID we're in a different phase. So I don't think anything flies anymore. If your product is fantastic, and if you've made it correctly, you put it out nicely, it will find its audience. This year I debuted on OTT with Farzi. Trust me, the amount of love I got, जो अली कह रहा था ना कि जो प्यार आपको महसूस होता है, जो आपको सामने से मिलता है, अब तो ऑनलाइन भी पता चलता है आपको, अब तो यूट्यूब पे मैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं ना 15 सेकंड वाले, 30 सेकंड रिव्यूज़, मैं सब देखता हूँ. ओके, तो देर इज़ नो वे दैट यू कैन हाइड. एवरीबडी विल से व्हाट दे वांट टू से अबाउट योर प्रोडक्ट. कई लोग अपना मुंह छुपा के बोलते हैं, कई लोग मुंह दिखा के बोलते हैं, बट बोलते सब हैं, है ना. सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. That is the reality of life, and I feel that a good film is a good film is a good film, a bad film is a bad film is a bad film, an average film is an average film. Everybody steps into a viewing experience with a certain expectation. Either you meet their expectation or you don't, and on certain really fortunate days you exceed their expectation. And that's pretty much what it is, according to me. It's a final word, man. I Ali love what he said. also- Big round of Ali applause also- there. We'll just take one question. More or less सारी Salil, चीजें- one second. sir? Ali, Ali sir. Ali, also, I wanted to ask you, having seen Sleepless Night, and I loved the film, is this why it is a bloody daddy? Because, as you well know, he has to rescue his son, and there is a bag of stolen cocaine. Well, अभी ट्रेलर लोगों ने देख लिया है, फिल्म आने दो रसल बहुत लोगों ने नहीं देखी है, बट yes, that is the story, that is the key factor. There is a very important reason the film is called Daddy, and when people watch it on 9th June, they will understand why it's called 9. Ali sir, अब ये जाके पहले देखेंगे, ऐसा 100% कंफर्म है. लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल है Ali प्लीज. sir- लास्ट मेरा ही होगा. Ali जिसके sir- हाथ में माइक है उन्हीं के साथ. मेरे हाथ में माइक है. शाहिद आपके जी ठीक प्लीज, सामने. एक आखिरी सवाल. जी शाहिद आपके ठीक सामने. सर एकदम. हाय. आपके साथ. हाय. आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ. आइए बिल्कुल बिल्कुल. आइए शुरू कीजिए. राउंड 1, टिंग टिंग. शाहिद भाई जी, भाई प्लीज एक सवाल है. हाँ हाँ एक सवाल. शाहिद जी, आपके किरदार ने बताया कि हर रात की एक कहानी होती है. और बात तो सही है कि हर रात की एक कहानी होती है. अभी तो अपनी पर्सनल लाइफ में मत जाना. नहीं. ओके, TMI हो जाएगा. तो आपके रात की ऐसी कोई कहानी है जो आपके लिए मेमोरेबल है? मुझे and पता था बेटा, खर्राटो वाली कहानी है, सुनोगे? हाँ जी बिल्कुल. खर्राटो वाली. ऐसे कोई ब्लडी डैडी की कोई कहानी है रात की? तू अपनी बता दे. यू आर डाइंग टू टेल अस. तेरे मन में है कुछ कि मैंने किया था ना उस रात, वो सबको बता देता हूँ मैं आज. चलो Tell us. यही रैप करते हैं. शाहिद, एक सवाल पूछना था आपसे. आप एक्चुअली इसके बाद भी वो जो सेकंड राउंड होगा ना बाद में, ये अभी शा- खत्म करते हैं. वहां से Let ऐसे me- वेविंग चल रही है. Let me हो just गया. ask one Yeah, yeah, question. one last One last question for the lady. शा- Yes. शाहिद, मतलब आपने इधर। अपने फिल्मी आप हैं किधर? आप दिख नहीं रही. इधर, इधर. हाय. आए तो आपकी फिल्मी करियर की शुरुआत एक अलग थलग किस्म के सॉफ्ट स्टोरी से हुई थी. देन आपने अभी जो आपकी फिल्में आ रही है, फर्जी हो या ब्लडी डैडी हो, मतलब एक अलग किस्म का शाहिद ऑन स्क्रीन देखने मिलता है. तो ये आपके एज की डिमांड थी, बिकॉज एक्टर भी इवॉल्व होते हैं हमारे जैसे, या तो फिर टाइम की डिमांड थी कि आपने इस तरफ, मतलब यू आर जस्ट वॉकिंग दैट पाथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा? जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं. फ्रस्ट्रेशन घर पे नहीं निकाल सकता, सेट पे जाके निकालता हूँ. फर्जी वॉज अ वार्म अप, और अभी ये ब्लडी डैडी में फुल एक्सपोजर. Shahid, to add घर to पे her, मैं डोमेस्टिकेटेड एकदम. Shahid, to add to her question. सबसे ज्यादा यही हंसा है इस सवाल पे. इसकी भी अभी नई नई शादी हुई है ना. ही कैन अंडरस्टैंड द इमोशन. Shahid, to add to her question, I would like to ask you: a new action hero is born. A new action hero is born. जी, आपका सवाल है या आप हाँ. बोल रही हैं? ये आपका सवाल है. स्टेटमेंट है. आप मतलब सवाल पूछ रही हूँ. Do you agree a new action hero is born? मैं तो 3 साल पहले पैदा हो गया था. आज आप देख रही हैं. मैं तो 3 साल पहले कन्विंस था. We are totally convinced. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll wrap this up. There'll be lots more occasions that we'll do this. We'll do a little photo op. So we'll just take the mics and we'll just have the chairs. I'll just have the chairs removed.